तो हमर 50% टेस्ट 1 प्रीलिम टेस्ट सीरीज रो टेस्ट 1 50% हमर डिस्कशन सॉरी थिला ऑलरेडी आज हम करबा 51 रो डिस्कशन करबा मैक्सिमम क्वेश्चंस जेंते जे हम कवर करे परबा देखियो 100 बंदा जेंते सारे परबा ट्राई करिया ओके चलो the first question which among the following were the recommendations of the Ellen Singhvi committee very important question तो कौन एलियन सिंघवी कमिटी कौन रेकमेंड करछंती मेनली ये कहा पई पंचायत राज पई रेकमेंड करछंती तो फर्स्ट the judicial tribunals should be established in each district to adjudicate controversies about election to the panchayat raj institutions. Second, nyaya panchayat should be established for a cluster of villages. The which of these statement are correct? कौन हमारा आंसर ये देखिए तो जुडिशियल ट्रिब्यूनल कथा से कहनथले न्याय पंचायत कथा कहतले ठीक अछि तो ऑप्शन आपनकर न्याय पंचायत एस्टैब्लिश करे पे कहतले क्लस्टर ऑफ विलेजेस पई ठीक अछि देखो आंसर तो सब गुडा का अपन मन रखिया पे दरकार कि एक्चुअली से कौन को गुडा को रिकमेंड करथिले मेनली न्याय पंचायत कथा कहतले ग्राम पंचायत को मोर पावर देबा कथा कहतले तो रिकॉग्नाइज विलेजेस टू मेक ग्राम पंचायत मोर वायबल कथा कहतले कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन टू पंचायत राज important constitutional recognition it also very important one constitutional recognition what is it कहतले integrity এটা इतनी important है but न्याय पंचायत important constitutional recognition important ग्राम पंचायत को more viable करिया कथा से कहतले এটা হচ্ছে more important more financial resources for the village. Okay. Next question. What was the landmark case that brought the basic structure doctrine into the limelight? Basic structure doctrine. The basic structure doctrine to the first easy one. Keshwanand Bharati first time में आया basic structure doctrine. The preamble is a basic structure or not? तो कुहाइला है कि yes preamble is a basic structure. और basic structure को हटा दे परिवने only alter करा है परिवने. कि तब amendment करा ही पारिबो ताकि कोहेतला केशवानंद भारती केस में अमेंडमेंट करा ही पारिबो arrange the following organizations in chronological order East India Association in London Landholder Society at Calcutta Madras Native Association Bengal British India Society British India Association already UPSC question आसी सरचे पूरा नो आसले भी आपनकर लैंड होल्डर सोसाइटी सेंते ए बी करके से पचरची ओके देखियो चलंतु तो केबे कोटा कोन हेची 1831 रे द्वारकानाथ टैगोर एस्टैब्लिश करथले लैंड होल्डर सोसाइटी 1831 कहां से तो मिसिकी ना प्रसन्न कुमार टैगोर राधाकांत देव राम कमल सेन भवानी चरण मित्र इमाने सब मिसिकी लैंड होल्डर सोसाइटी करथले एडा होछ सबटु ओल्डेस्ट यदि कहबा इंडिया रो सबटु ओल्डेस्ट सोसाइटी कोटा सेडा होछ आपनकर लैंड होल्डर सोसाइटी ओके तापर हेतला कोन आपनकर ना ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1839 तापर मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1849 तापर आपनकर असला ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851 ओके तो तापर आपको मिसे कि से कोन कले दादा भाई नारोजी 1866 रे ताको कले ईस्ट इंडिया एसोसिएशन एटा इंपोर्टेंट ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नारोजी आपको मिसे कले ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन को ठीक ऑप्शन जदि देखियो ऑप्शन डी होचे आपनकर करेक्ट आंसर which institution released a report titled race to net zero को आके आपनकर जतकी गुडा को इंस्टीट्यूशन रिपोर्ट आपनकर प्रीवियस जो सेशन करा हेता सेठी सब गुडा मेंशन होचे तो आपन ताको थरे वंस गो थ्रू करिवे तो एटा की आपनकर बाहर करछि ना एटा होचे आपनकर यूएनईएस ओके यूएनईएस के ताको बाहर करछि आपनकर United Nations Economic and Social Commission for Asia and Pacific okay ये आपनकर रिपोर्ट बाहर करछि रेस टू नेट जीरो why the home rule agitation proved to be short lived the home rule agitation हिला आपनकर नॉन कोऑपरेशन पूर्वरु फर्स्ट होम रूल एजिटेशन स्टार्ट हेतला तो के आपनकर करथिले मेनली आपनकर अनिवेशन स्टार्ट करथिले
देन बाल गंगाधर तिलक स्टार्ट करते बाल गंगाधर फास्ट स्टार्ट कले तापर एनिवेशन स्टार्ट कले एनिवेशन कहा सहित मिसिकी ओलकोट और ब्लैक स्काई इदि सहित मिसिकी से स्टार्ट करते ये माने होचन आयरिश ओके माने होचन आयरिश बाल गंगाधर तिलक इंडियन ये होचन त दी जण होम रूल स्टार्ट करथिले तो कोन देला चलन देखियो देयर वाज अ लैक ऑफ इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन बेशांत वाज अनेबल टू गिव अ पॉजिटिव लीड कम्युनल रायट्स वर विटनेस्ड तो से टाइम रे कोन हितला काहे कि हे पतला रेला तिलक कोन करथले से लंडन रे गोटे केस लढिया पे पड़ जायतले आ तापर बेशांत ता कोन सब ठीक is equal who was the leader of civil disobedience movement in Odisha तो किए आपनकर इंडिया ओडिसा जब देखिया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट रो के लीडर नेले ना गोपबंधु चौधरी ठीक अछि व्हाट्स द बेस्ट क्वेश्चन आपनकर आसुची who termed the Montfort reforms as unworthy and disappointing a sunless dawn कि आपनकर कहतले Montfort reform को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म असला 1919 रे जो रिपोर्ट असला ताको के कहले ए सनलेस डाउन के कहले तला आपनकर बाल गंगाधर तिलक એટલે એ sunless dawn right who is the author of the book Hema Malini Beyond the River a very recently आपनकर current news रे अछि तो कि आपनकर एटा ना राम कमल मुखर्जी मन रखन बुक्स एंड ऑथर्स जो गुडा को भी इंपोर्टेंट टिके टिके बस आखि बोले कि जीवा कथा तेबे ओपीएससी कोन पचार ठीक है recently which country is contemplating the lifting of vehicle import restrictions to stimulate economic growth which country contemplating the lifting of vehicle import restrictions ke करछि ना भी Sri Lanka consider the following statement regarding natural gas important one natural gas the natural gas is used to power appliances like stoves and furnaces yes natural gas is a relatively clean burning fossil fuel resulting in fewer emissions of nearly all type of air pollutants and carbon dioxide when compared with burning coal or petroleum products extraction of natural gas from the ground does not involve release of any greenhouse gas okay extraction of natural gas देखो एटा ठीक अछि natural gas relatively clean natural gas clean burning fuel ठीक अछि natural gas को हम appliances रे यूज करछो ठीक अछि but extraction of natural gas from the ground doesn't involve release of any greenhouse gas okay तो एटा होछ अपन निहाती जतबेले भी अपन ग्राउंड रो नेचुरल गैस एक्सट्रैक्शन होछ तो किछ ना किछ ग्रीन हाउस गैस एमिट होछ तो एटा होछ अपन फुल आंसर होछ 1 and 2 तो से देखिए हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट तो अपन ओनली 2 आंसर होछ ओनली 2 देखिए नॉट आसिला ना तो अपन को खटकीवा दरकार कि नॉट आछी तो ताको अपन और स्ट्रेस करबे आउ थरे पढिबे से क्वेश्चन consider the following instruments foreign currency convertible bonds reinvesting profits earned from overseas operations non-resident external deposits equity capital of unicorporated bodies how many of the above can be influenced in the fdi को केते जणा इन्फ्लुएंस आपनकर करि पारचंती केते जणा एथरो करि पारचंती आपनकर फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड एटा आपनकर एफडीआई को इन्फ्लुएंस करि परिबनी तो रीइन्वेस्टिंग प्रॉफिट अर्न फ्रॉम ओवरसीज ऑपरेशन या आपनकर एफडीआई को करबो नॉन रेसिडेंस एक्सटर्नल डिपॉजिट जो माने एटा भी आपनकर करबो तो 213 से आपनकर ऑप्शन कोन देला ऑप्शन देला ओके ओनली 1 ओनली 2 तो ओनली 2 आपनकर 1 होची बनी किंतु 213 ए देटा ओनली 2 आपनकर होची करेक्ट आंसर ठीक है एक्सप्लेनेशन अपन देखिया पे चाहेबा अपन देखि देबे एक्सप्लेनेशन रे अपन जेतले आंसर पीडीएफ प्रोवाइड करा जबो त सेठी सब गोडे एक्सप्लेनेशन अछि बस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो गोडे सोडा में दउ छु तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डार्क फाइबर इंपोर्टेंट वन डार्क फाइबर न्यूज रछि अपन डार्क फाइबर तो डार्क फाइबर इज unused fiber optic cable and infrastructure that is available for purchase or rent from network service provider. Dark fiber is active because no information is passed through it, so no light pulse is transmitted. SEBI bans the uses of dark fiber in India. How many above the steps are correct?
ଆପଣଙ୍କର ତିନିଟା ଯାକ ଠିକ ଅଛି। uses of dark fiber in India ठीक है तो डार्क फाइबर एक्चुअली कौन जो फाइबर गुड़ा आपको तळे देखि जाउ नेट आपनकर आसे होई से सब फाइबर गुड़ा होचंदी किंतु मैक्सिमम दिन पर आसु कोले कोले नौजन से कि रहउछि त ता भीतर जो ट्रांसमिशन किछि भी होउनी ओके तो सेई गुड़ा होछि आपनकर डार्क फाइबर तो अनयूज्ड फाइबर अपडेट देबा पाई आपनकर नेट कनेक्टिविटी पाई से माने खोली के करूछंती बट सर्विस प्रोवाइडर नहीं कि सर्विस एबे पर्यंत दिया है सेगुडा बस ताको कहचे डार्क फाइबर एक्चुअली तो से भी कोन करछ बैन करछ डार्क फाइबर यूज करिया पे इंडिया रे तो एगुडा को तीनटा जगह होचे ठीक with which city in Maharashtra has been selected by Union Ministry of Youth Affairs and Sports as the venue to host the National Youth Festival 2024 National Youth Festival आपनकर कोठी हबो महाराष्ट्र रे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ कोठी करिया पे चाहछन्ती नासिक ओके तो 2024 रो देखछन 23 रो भी आपण देखि नेबा दरकार कि यूथ फेस्टिवल कोठी हेतेला important the Kharaswa massacre that was recently in news happened in which current state the Kharaswa आपण जानथि जदि ओडिसा रा आपण रिऑर्गनाइजेशन ऑफ स्टेट जान छथि तबे आपनकर कोन खरसवा आपनकर म्युनिसिपल नथला ओडिसा रे तो ओडिसा तो सेटा कोठी रहि गेला आपनकर झारखंड रे रहि जायतला सेते बेला बिहार एबेर डिवाइडेड जेते बेला हेला 2010 रे तो सेते बेला आपनकर झारखंड रे रहि जायछि हां सढे कळा और खरसवा सढे कळा और खरसवा ए दिटा आपनकर झारखंड रे रहि जायछि तो खरसवा मैसाक्रे जोटा हेतला तो सेटा कोठी हेतला ना झारखंड जेते एबेर झारखंड रे अछि सेटा Answer the following statements. Glaciers are the largest source of fresh water in the Himalayan ecosystem. Glaciers. Okay. A glacial lake outburst flood gulf is caused by the failure of a dam containing a glacial lake. देखो डैम कौन कहतला अपन को जो सॉफ्ट रॉक को से नहीं की जाउची इरोड करके नहीं जाउची एठी जेकी जो मोरेन गुडा को डिपोजिट कर दोछु तो एठी गोटे डैम फॉर्मेशन होची जा द्वारा कि एठी लेक वाटर ता आपनकर लेक हुला फॉर्मेशन होची वाटर रेट स्टैग्नेंट के रहि होची जदी एसे कहला कि जदी कॉज विद द फेलियर ऑफ अ डैम जदी डैम ता फॉर्मेशन हबनी तो से कोन हबो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट होबो कि नहीं ग्लेशियर एटा होची लेक तो लेक ता आउटबर्स्ट हिजबो कि नहीं लेक ता भई के पळेबो कि नहीं बस देखो अपन कांसेप्ट जानथिले डैम रो तो अपन सब गुडा माने आंसर अपन केमति कर दे परिबे तो एटा ठीक अछि देयर इज considerable shrinking of glacial lakes across the Himalaya in recent decade ना अपन जान छथि ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग कोन होची ना आपनकर एबे टेंपरेचर जेहेतु हाइक होची तो आपनकर जेते भी ग्लेशियर्स अछथि समस कोन होचथि ना मेल्टिंग तो एडा गोटे कंसर्न एबे हेची कि आपनकर अंटार्कटिका रे जो बड़ बड़ ग्लेशियर छै से माने भी मेल्टिंग होची सो दैट कि सी लेवल आपनकर कोन होची ना सी लेवल राइज होची जदि देखिबा ताले ओडिसा सात भाया गोटे गाँ अच्छे जोटा आगर जोटा थिला 16टा पड़ा थिला सेठी तो सेगुडा को कोन हे सब सबमर्ज हे जायछि एबे सबमर्ज हे जायछि अंडर द सी अंडर सी तो आपन सी वाटर ता सी लेवल ता राइज करूछि तो द श्रिंकिंग तो होनी ग्लेशियर लेक श्रिंकिंग तो होनी रादर कि कोन होबा आपन एक्सपैंड होबो तो एटा होछि आपन भूल तो देयर इज अ कंसीडरेबल श्रिंकिंग ऑफ ग्लेशियर लेक अक्रॉस द हिमालयन रिसेंट एटा होछि आपन भूल ठीक अछि अपना कांसेप्ट जानले केमती माने होछि ग्लोबल वार्मिंग हैला ग्लोबल वार्मिंग रो अपन को तरळे के आसीला जो बरफ गुडा तो से गुड ग्लेशियर जदी मेल्टिंग होछि तबे से लेक करे आउरी बड़ बड़ लेक फॉर्मेशन है कि रहिबो ओके ना तो श्रिंकिंग होबो लेकटा so how many of above statement is are correct only two which of the following statement best describes the term Triffin dilemma okay Triffin dilemma देखो टर्मिनोलॉजी आपनकर एबे रिसेंट रो करंट को नै के क्वेश्चन आउ स्टैटिक क्वेश्चन आसुनी इकोनॉमी हो आपनकर कि जे कोन से क्वेश्चन आपनकर स्टैटिक क्वेश्चन आसुनी से माने करंट अफेयर्स रो क्वेश्चन को नै के ही इकोनॉमी क्वेश्चन तैयारी करछन ठीक अछि तो सही हिसाब रे आपन प्रिपेयर होवा में पड़बो तो एबे रो न्यूज़ एटा द ट्रिफिन dilemma कोन role of the government intervention and fiscal policy to stabilize the economy and prevent recession Triffin dilemma a framework for understanding how to strike a balance between cooperation and competition for strategic decision making. What a dilemma eta. So eta decision making, strategic decision making maybe he na pare. Conflict of economic interest that arises between short-term domestic
and long-term international objectives for countries whose currencies serve as global reserve currency. The main definition is a conflict of economic interest that arises between short-term domestic and long-term international objectives for countries. Okay, whose currencies serve as a global reserve currency. Consider the following statement. India's external commercial borrowing in rupees helps to promote the internationalization of the rupee. Okay. External commercial borrowing. For a currency to be considered a reserve currency, it needs to be fully convertible, readily usable, and available in sufficient quantity. Yes. Currency considered reserve currency needs to be fully convertible. India permits full capital account convertibility without any constraint on the exchange of its currency with others. No. India full capital convertibility allow permit. The full 1 and 2 upon take. So how many of the above statement are correct? Only 2. Which of the following are the features of smart food grain storage system? Smart food grain storage system. Technology developed under Ministry of Electronics. METI रो guidance under रे ए technology किए develop करछे आर features कोन ए जो technology develop हेछि under METI तारा technology कोन आर features ना conveyorized loading and unloading of grain bags with RFID traceability. Okay. Online weigh and moisture measurement. Radio frequency based removal of moisture from the grain. सब गुड़ा को ठीक एक्चुअली मैं कांसेप्ट देबा पई चाहतलु कि कोन एटा मेटी जो करछि टेक्नोलॉजी ता सेफ्टी टेक्नोलॉजी कोन डायरेक्ट अपन को सेफ्टी टेक्नोलॉजी की करछि भी पचार दे पारे कि सेफ्टी टेक्नोलॉजी कोन को बेस से भी पचार दे पारे एटा आरएफआईडी टेक्नोलॉजी बेस ठीक अछि रेडियो फ्रीक्वेंसी अपन कर यूज ठीक देखो समुद्र का India and Russia are part of each other. In Russia, पूरा news रे अच्छे. The part of the following: International North-South Transport Corridor, Shanghai Cooperation Organization, G20 grouping BRICS. तो अब G20 का अपन जान चले हाँ SCO रे अच्छी. Then International North-South Transport Corridor रे भी India और Russia दे जोड़ा part है. तो सब बड़े कौन. Consider the following pairs. PM Janman Yojana provides end-to-end support to artisans and craftspeople. PM Vishwakarma Yojana aids the development of particularly vulnerable tribal groups. PVTZ. Pradhan Mantri Ujjwala Yojana promotes energy efficiency by distributing LED bulb. Now, how many of the above pairs are correctly matched? जैसे देखिए आपण 8 में देखिए आपण PM विश्वकर्मा जैसे देखिए PM विश्वकर्मा टा होची आपण कोन पाई ना प्रोवाइड एंड टू एंड सपोर्ट टू आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्स पीपल तो PM विश्वकर्मा होची एटा तो PM जन्मन होची आपण एटा PVTG मानक पाई डेवलपमेंट पाई जो योजना आछे दैट इज होची PM जन्मन इंपोर्टेंट वन PM विश्वकर्मा होची आर्टिसंस क्राफ्ट्स मानक पाई ओके और PM उज्ज्वला होची आपण एटा होची आपण LPG पाई LPG पाई आ उजाला जो देची उजाला आ उजाला होत अछि आपनकर उजाला तो उजाला होछि आपनकर कोन ना LED बल्ब पाई ठीक अछि हाउ मेनी ऑफ द अबव पेयर इज करेक्टली मैच नॉन कोटा भी इठु ठीक नहीं consider the following statement India has decided to build a gravitational wave detector to join the international LIGO, Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory Network, LIGO. News report, science and tech question. India is a full member of ITER project, which is working to harness energy from fusion reaction. ITER project. Eguda keyword fusion apanakar unrolled chain reaction that is nuclear fusion जोटा कि कोठी होची सन जो इनर भाग that is होची आपनकर nuclear fusion किंतु आपण atomic bomb जदि एग्जांपल आउट होची atomic bomb hydrogen bomb एगुडा को कोन एगुडा को होची आपनकर nuclear fusion
ओके तो अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन किंतु जेतबे न्यूक्लियर फिशन होची फिशन न्यूक्लियर फिशन होची दैट इज होची कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन कंट्रोल न्यूक्लियर रिएक्टर रे जो गुडा आपनकर करा होची सेटा होची कंट्रोल्ड वे रे आपनकर एनर्जी बाहर करा होची तो दैट इज होची आपनकर न्यूक्लियर फिशन ठीक আছে the nuclear fusion कोन fission कोन difference बुझले तो India which is full member of ITR project which is working to harness energy from the nuclear fusion reactions. India has a strong participation in the Large Hadron Collider LHC, the world's largest and most powerful particle accelerator. तो आपनकर जदि देखि आंसर कोन 73 रो देखिबे आरो डिस्क्रिप्शन गुडा को भी पूरा फुल से दिया हेची ताको भी देख परबे आपण तार आंसर जति सब गुडा का होची ठीक ऑल थ्री आंसर होची ऑल थ्री तो इंडिया होची कोन ना इंडिया डिसाइडेड टू बिल्ड अ ग्रेविटेशनल आपनकर लिगो रे से जॉइन करची लिगो रे आउ हार्नेस करबो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन करके जैसे थ्रू जो एनर्जी बाहरिबो ता पई से गोटे प्रोजेक्ट रे फुल मेंबर गोटे प्रोजेक्ट रो हेची आईटीईआर गोटे प्रोजेक्ट रो आउ India has a strong participation on large LSC रे India has strong participation अच्छे तीनटा बड़ा हमर ठीक consider the following statement regarding direct shedding of rice important direct shedding of rice DSR direct shedding of rice भी आपन न दे पारे से DSR पारे versus conventional transplanting method दे पारे तो एटा आपनकर कहा पई होची mainly पैडी पई करा हुए ठीक धान in direct shedding of rice, paddy is sown directly in the field without any nursery preparation or flooding. Yes. तो DSR मेथड ही होची सेटा कि डायरेक्ट शेडिंग आपनकर किछि आगरु प्रिपरेशन किछि करिया दरकार जमी को खुदाई करचंती तापरे आपन ता पानी देके रखुचंती जो होची ना तो सिंपल बिल्कुल करबा नै एक्चुअली तो शेडिंग रे आपनकर डायरेक्ट फील्ड विदाउट एनी नर्सरी और प्रिपरेशन ताको छड़ा in transplanting the further to the waste sheets in soil preventing their emission. Yes. India water is replaced with something hela जो गुड़ा को तक अटैक करे में आसी तो अवश्य तक मारे पे effective against and safe water compared to transplanting. But this is common water logging when against our water safe correct. So how many above statement correct? So mainly it also a method direct shedding of rice method is important. Consider the following statement regarding Forest Conservation Act 1980. Forest Conservation Act 1980, very, very important. The legislation empowers the central government to regulate the extraction of forest resources by industries as well as forest dwelling communities. देखो दानो empowers the central government to regulate the extraction of forest resources by industries as well as forest dwelling communities. एठी आपको खटके regulate. Okay, they're not a regulatory body एटा गोटे नुह actually. Okay, चलो देखिए first देखि सरीबा तापरे में करियो. The act initially provided protection to the areas not formally notified as forest by the central or state government. It is the only act that protects the right of the tribals and forest dwellers depend on forest for the livelihood. The forest 2006 forest act 2006 was तो फॉरेस्ट मान को तो ए एक्ट रे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट रे दिया है ना पावर 2006 रे आपन को दिया है ग्राम सभा को आपन को पावर दिया है ग्राम सभा से ही आपन को डिसाइड करियो कि माइनर प्रोड्यूस कोटा मेजर प्रोड्यूस कोटा और माइनर प्रोड्यूस मान को जो गुडा को एक्सट्रैक्शन हो तार पावर ग्राम सभा कमीशन ने की करावा दरकार ठीक है जोटा कि आपन को 2006 फॉरेस्ट राइट एक्ट रे आछ ओके तो एटा आपन को न एटा आपन को रेगुलेट करूनी तो कोटा ठीक आपन को 2 ही ठीक आंसर ओनली 1 आंसर हो ओनली 1 सेकंड हो consider the following statement. Smart lander for investing moon sling in Japan is first lunar surface mission. Japan ro apanଙ୍କର smart lander for investing moon sling.
lunar polar exploration (LUPEX) is a joint mission of ISRO and NASA. LUPEX, joint mission of ISRO and NASA. The moon's polar region is characterized by rocky terrain, craters, and steep slopes. এটা তো ঠিক আছে, আপনি জানলে তিন, এটা ঠিক আছে। তারপরে স্মার্ট ল্যান্ডার ইনভেস্টিং স্লিম হচ্ছে জাপানর ফার্স্ট লুনার মিশন। ইয়েস, এটা স্লিম হচ্ছে জাপানর ফার্স্ট মিশন, তো ঠিক আছে। বাট লুনার পোলার এক্সপ্লোরেশন যে লুপেক্স জয়েন্ট মিশন অফ ইসরো আর নাসা নাই, এটা ଗୋଟେ জয়েন্ট মিশন ନୁହଁ। ଓକେ, এটা ଦି ଜଣ ସେପାରେଟ ହେଇକି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଜଏଣ୍ଟ ମିଶନ ନୁହଁ ଏଟା, ଠିକ ଅଛି, ସେପାରେଟ ରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତ କୋଉଟା ଠିକ, ଏଟା ଆମର ଓନ୍ଲି important one. Consider the following statement regarding Kora generalize. बहुत ही न्यूज ଅଛି, आपको जीआई टैग ଅଛି, ଆଉ ଏଟା ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଫେମस ଏଥିପାଇଁ वर्ल्ड यार ମାନେ ଚାହିଦା ଏତେ ଅଛି, आपको इंपोर्ट ବି କରାବାର ମାନେ ଇଏ ଅଛି। କାହିଁ ଏଟା ଅଛି ଏଟା ଆପଣଙ୍କର ହାର୍ଟ ଏଗୁଡା ସବୁ ଡିଜିଜ ଆପଣଙ୍କର କରାଯାଏ ରାଇସ୍ ତାର ନା ତାର ଆଉ ଉପରେ ନ୍ୟୁଜ ଆସେ ମାଗିଆ ବି ହେଇଛି ଏଟା ମାନେ ଯେହେତୁ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ ବି ପାଇଛି, ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ। So it is the black colored rice variety known for its aroma, texture and nutritional value. Yes, आरो बहुत ही बढ़िया अरोमा आउ एटा ब्लैक कलर आपनकर जीरा जेमति ना रो जना पड़छ ना काला जीरा राइस, तो पूरा जीरा भला देखिया पे आपन पूरा ब्लैक ब्लैक कलर एटा ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ମନିଟର ସନଲାଇଟ ମନିଟର ସନଲାଇଟ କିଛି ସେମିତି କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଏଇଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ। The rice grain resembles ମାନେ କଣ ଆପଣଙ୍କର ଜିରା rice grain resembles କଳା ଜିରା ରାଇସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଠିକ ଏଟା। How many of the above statement is right? ଆପଣଙ୍କର anti glycemic property ଅଛି, ସେଟା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। The mark quoted important mark quoted means to mark quoted promote and create an investor friendly ecosystem based on skills involved by the new startup ventures, facilitate mentorship for startups and across diverse sectors, extend financial aid required for the development expenses for public-private partnership projects in the sector. The mark facilitate mentorship for startups across the diverse sector. Startup को facilitate mentorship facilitate करेगा पाएं। Actually, central government start करके अपनों को mark होता है। Gaza Strip often seen in the news share border with which of the following countries? देखिथिलो हमें एक इजराइल रो border इजराइल पाखरे थिला जेतोळे हमें फर्स्ट क्लास करथिलो, तो एठी हमें देखि नबा आंसर पीडीएफ रे आपनकर जदी मैप दिया हेतिबो तेबे सेडी देखाबो। देखो गाजा स्ट्रिप, तो एटा होछ आपनकर इजराइल, एठी आपनकर केतरा कंट्री से आपनकर शेयर करछि गाजा एटा आपनकर मेडिटेरियन सी रहला, तो एटा लैंड बाउंड्री त नुह, तो इजराइल तो देखो तारे दीटा कंट्री से गाजा शेयर करछि। ऑप्शन होछि बी, टू कंट्रीज इजिप्ट एंड इजराइल। मन रखिदा तो काई ना एटा पे बहुत न्यूज रे अछि, सब गुडा करे बे माने पूरा कंटेंशन बोन ऑफ कंटेंशन होकर ए जो गाजा स्ट्रिप एंड जेरूसलम एगुडा तो सीरियस भी मानकर प्रॉब्लम अछि, मानकर ए जो तो चैलेंज में इजिप्ट इजराइल गाजा स्ट्रिप पाइन चल जे, तो एगुडा को मन रखन कि When is the World Kiswahili Language Day celebrated every year by UN? UN ଗୋଟେ language day celebrate କରୁଛି Kiswahili, ତ ଆର ନିହାତି କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଥିବ। एक्चुअली एटा कोन एटा
यूएन जो सेलिब्रेट कहा पाए एक्चुअली सेलिब्रेट एटा होची सब सहारा अफ्रीका जो माने रुहंती ता पाए ए लैंग्वेज डे इस बार सेलिब्रेट करूची तो केबे सेलिब्रेट करूची जुलाई 7 आपनकर न पड़ी पारे किंतु वर्ल्ड किसवा वाली लैंग्वेज सेलिब्रेट करछि किए ना यूएन को एरिया पाए सब सहारा अफ्रीका रो लैंग्वेज एटा तो एगुडा को मन रखु ठीक है with reference to gray hydrogen consider the following statement important most important question gray hydrogen blue hydrogen green hydrogen ठीक है ब्लैक हाइड्रोजन चारिटा हाइड्रोजन अपन पूरा जानथिबा दरकार कि कौन कौन हाइड्रोजन ठीक तो ग्रे हाइड्रोजन it is generated from natural gas or methane through a process called steam reforming. It is called gray hydrogen due to the distinct gray smoke produced when the burnt in the presence of oxygen. So which of the statement given are correct? तो अपन पूरा लागो छ ठीक only one. तो जो मीथेन जो प्रोसेस रे बाहर छ स्टीम रिफॉर्मिंग प्रोसेस रे बाहर होछ तो सेटा ही होछ ठीक आपो ही कहजे ग्रे हाइड्रोजन आर टोटल डिस्क्रिप्शन बहुत भल से दिया छ कि कहा का केंति इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस रे जोटा आपनकर हाइड्रोजन बाहर होछ ताको आपनकर कोन कहजे ग्रीन हाइड्रोजन कहजे ठीक अछि तो ग्रे हाइड्रोजन देखि कोन कोन ग्रे हाइड्रोजन होछ प्रोड्यूस फ्रॉम नेचुरल गैस और मीथेन तो ऐसे मान ठीक अछि बट विदाउट कैप्चरिंग ग्रीन हाउस गैस तो ग्रीन हाउस गैस को ये कोन करबो कैप्चर करबो एठी होचे डिफरेंस आपनकर ब्लू हाइड्रोजन रे सिमिलर टू ग्रीन हाइड्रोजन बट एठी आपनकर कोन करबो कैप्चर करबो आपनकर ग्रीन हाउस गैस को और अंडरग्राउंड रे स्टोर करबो ठीक है हाइड्रोजन मेन डिफरेंस ग्रे हाइड्रोजन और ब्लू हाइड्रोजन भितरे ही एते कि ये ग्रीन हाउस गैस को कैप्चर करबनी ये आपनकर ग्रीन हाउस गैस को कैप्चर करके स्टोर करके रखिबो ग्रीन हाइड्रोजन होचे कोन आपनकर ना स्प्लिट हो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस रे बाहरिबो दैट इज होचे आपनकर ग्रीन हाइड्रोजन choose the correct option considering the statement about precision farming very important precision farming the precision farming also called satellite farming yes तो precision farming होच कोन आपनकर जहां भी टेक्नोलॉजी यूज करके सैटेलाइट हला देना ऐसे वो टेक्नोलॉजी को यूज करके जो बडा आपनकर जो चाष करा होच ना आजकल हेल्प करिया पे फार्मर को मेनली तार प्रोडक्शन को बढ़ेबा पे तो ताको एक्चुअली कहा होच कोन ना precision farming precision farming रा कोन होची डिक्रीज यूज ऑफ फर्टिलाइजर से आपनकर 24/7 आपनकर जमी को से देखुतबो सैटेलाइट ठीक है आपन को रिपोर्ट करतबो वेदर फोरकास्ट करतबो आपनकर जमी को को टाइप रो न्यूट्रिएंट दरकार केते परिमाण रो वाटर दरकार तार सॉइल रो क्वालिटी कोन को सारा देबे आपन ताको सब गुडा आपन precision farming थ्रू रे करा जाय ठीक है तो decrease the use of fertilizer yes reduce pollution automatically decrease the use जदी fertilizer यूज हम डिक्रीज करू छ त pollution रिड्यूस हो ओके काहे ना वाटर पूरे अपन को जीवन आउ बेसी एनपीके जदी अपन पको छ तबे वाटर पोल्यूशन सॉइल पोल्यूशन एरिडिटी बेसी जो सॉइल का जल्दी एरिडिटी पळे आसे सतरे किंतु जदी अपन कम फर्टिलाइजर यूज करू छ अपन बायो फर्टिलाइजर यूज करू छ तबे अपन को पोल्यूशन कम हो ठीक सॉइल एरिडिटी भी कम हेबो वाटर पोल्यूशन सॉइल पोल्यूशन भी कम तार ऑप्शन देखिबा जदी प्रिसिजन फार्मिंग रे सब गुडा को ठीक इंपोर्टेंट क्वेश्चन इथरा आपनकर मेन रे 20 मार्क क्वेश्चन असला प्रिसिजन फार्मिंग which of the following gas used in common refrigerator आपनकर को गैस अपन यूज करे जाने फ्यूल तो कॉमन रेफ्रिजरेटर आपनकर जो गैस गुडा को बाहर एक्चुअली सीएफसी तो एगुडा को सब मतलब सीएफसी जो बाहर आ द्वारा कोन होई एटा आपनकर जाय कि आपनकर ओजोन लेयर जो अछि ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फीयर जो ओजोन लेयर अछि आपको आपनकर पाखरे डिप्लीट करे जा द्वारा कि कोन होय ना ओजोन होल फॉर्मेशन होय जा द्वारा कि सन रो डायरेक्ट अल्ट्रा यूवी रेस ऐसे कि हमरा डायरेक्ट अगर कोन स्किन कैंसर एंड बहुत डिजीज होछि ओके तो रेफ्रिजरेटर हो जो गोटे बहुत बड़ा मीडियम रिलीज ऑफ सीएफसी को गैस यूज करा जाए रेफ्रिजरेटर रे फ्यूल important question the relative contribution of carbon nitroxide CFC methane towards global warming are तो global warming mainly केओटो हिसाब रे 6 टा गैस अछि देन आपनकर इंडियन गवर्नमेंट को गुडा को हमर करछि तो सब गुडा को आपन जानिथिबा दरकार हम अलगा जो क्वेश्चन रख दो सेथरे को पूरा ने सिलेबस को जल्दी पूरा कंप्लीट हो सके हमें पूरा दो ठीक है तो एठी देखो अपन
कंट्रीब्यूशन केते केते कहार कंट्रीब्यूशन सबुठ अधिक मनकर हेतिबो कार्बन नाइट्रस ऑक्साइड CFC मिथेन कार्बन डाइऑक्साइड एठी आपनकर कटि जेछि डाइऑक्साइड CO तो CO2 NO2 N2O CFC मिथेन तो कोडा फास्ट होछि आपनकर CO2 देन आसीबो आपनकर मिथेन देन आसीबो आपनकर CFC आर परसेंटेज ता लिखाइ दिबो आंसर PDF रे आपनकर परसेंटेज दिबो तो आपन ताकू भी देखि नि थरे केते केते परसेंटेज एक्चुअली अछि प्रिसिजन फार्मिंग रो देखो बेनिफिट गुडा को पूरा बहुत ही भल से दिया है तो रियल टाइम डाटा देखि जो रियल टाइम डाटा क्रॉप स्टेटस वेदर फोरकास्ट एगुडा को सब करी होची इफेक्टिव मेंटेनेंस ऑफ सॉइल हेल्थ डिक्रीजिंग यूज ऑफ पेस्टिसाइड बहुत ही वेरी इंपोर्टेंट टोटल अपन आपको पढ़ देथियो ठीक छै तो CO2 जदि देखि अपन 60% आर रहउचे contribution CS4 then 20% CFC रहउचे 14% N2 रहउचे 6% first option number correct stainless steel is an alloy of stainless steel kahara alloy stainless steel upon iron and nickel at a static question favorite question thila fuse to semti stainless steel alloy mane alloy sona ki bolse alloy concept the brass and alloy source of energy from the sun it already कहि सच आपको source of energy from the sun energy जो source energy sun रो हमको जो तो जो energy हमको मिलुछि तो को source रे के कोन जो energy एते पाउछु तो कोन पे एक्चुअली एटा हमको न्यूक्लियर फ्यूजन कहले न्यूक्लियर फ्यूजन अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन आ द्वारा ही पूरा आसुछि एग्जांपल हाइड्रोजन बॉम्ब भी अपन देख रहे ठीक अछि तो सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सन होची न्यूक्लियर फ्यूजन न्यूक्लियर फिशन जदि देबे ताला अपन कोडा आपनकर जो गोडा को और अच्छा न्यूक्लियर रिएक्टर न्यूक्लियर फिशन देन आपनकर यूज करा होची आपनकर आइसोटोप चेंज करके ताको अपन कैंसर डिजीज को ये करिया पई तो से गोडा होची आपनकर न्यूक्लियर फिशन most important question पूरा न्यूज़ रे अच्छे Uttarakhand became the first state to pass UCC. Goa is the only place where UCC is active. एबे current affairs रे अच्छे actually एटा under FR देखो तो under FR एटा होचे article 44 UCC enshrined in the constitution. तो आपण जान छथि yes उत्तराखंड एबे करछि एबे न्यूज़ एटा current news कि उत्तराखंड एबे जनवरी फेब्रुआरी रे अपन फर्स्ट स्टेट टू पास यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड से पास करछि उत्तराखंड तो एटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन गोवा इज द जोठी के आगरो आपनकर यूसीसी एक्टिविटी अछि कि जामना portuguese मानकर जेंति आगरो थिला सेना को वेरे गोवा रे आगरो यूसीसी एक्टिविटी अछि तो उत्तराखंड एबे पास करछि अंडर एफआर फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 44 अछि ना एटा ही हमको खटकेवा दरकार अंडर डीपीएसपी 3 एटा टिकेटा 44 देखि संगे संगे टिक ऑल बोली मारि देबे नाही देखिबे कि कोन डीपीएस अछि ना कोन अछि तो एमिति रे टिके रे ही से पूरा देथियो बोल ठीक अछि तो आर्टिकल 44 यूसीसी आपनकर मेंशन करा है कॉन्स्टिट्यूशन रे ठीक अछि डीपीएस आपन मेंशन अछि ठीक अछि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर्सनल लॉ गुडा का सब गुडा पूरा कंट्री में गोटे आपरो पर्सनल लॉ रहयो very important question choose statement about NALSA OPSC's favorite question NALSA it established under Legal Service Act 1987 Legal Service Act 1987 yes आपनकर भगवती कमिशन आपे बसला मन के जे के रेकमेंड करथिले नासा कोन पे हितला एक्चुअली फ्री लीगल एड टू द पुअर फ्री लीगल एड टू द पुअर कोन आर्टिकल रे आस्तिला आपनकर एटा आपनकर पीएसपी रे भर्ती करला 39 नंबर रे ठीक अछि 39 ए रे आपनकर आर्टिकल 38 ए रे इंक्लूड कराना फ्री लीगल एड टू द पुअर जो गरीब माने अछन जो मान की केस लड़ी पारना तो सेमान को फ्री सेमान पई व्यवस्था करबो सेमान केमती लीगल लड़ी पारिबे ठीक तो फ्री लीगल एड तो पुअर देबा पई आपन आर्टिकल 39 ए आसिला आपन रेकमेंड करथले के ना भगवती
कमिटी आपनकर बसला से रेकमेंड करते तो इट एस्टैब्लिश इतला अंडर लीगल सर्विस एक्ट 1987 ठीक article under article 39A 14 22 1 provision about free legal aid yes 39A thilo हम 14 fundamental right 14 अछि समस्त समान अधिकार मिलिबो 22 1 ओके तो तीनटा गोडा करे आपनकर अछि कि फ्री लीगल एड दबा पे नालसा apex body for free legal aid established in 1994 इठी आपनको देखन तारीख जोटा छै डेट गोडा जगह आपको खटकेबा नॉट जो खटकेबा दरकार कि नालसा apex body of legal aid ठीक अछि कोन नालसा ता पानी बसिला लीगल सर्विस देबा पई तो नालसा होछ apex body for free legal aid established in 1994 1990 तो 1 ठीक 2 ठीक आपनकर 3 टा होछ तो अभी तो जब देखा कोटा only 1 and 2 होछ आपनकर आंसर गोवती कमिटी मन रखबे 19A मन रखबे 14 22 1 खाली 19A रे आपण मन रखि देला हो गोटे सेकंड अमेंडमेंट रे आसीतला एटा फ्री लीगल एड तो पूर देबा पे सब बडा जिंस आपण मन रखिया ठीक consider the following statement choose the correct option yeah eta be apan current affairs 19th summit of NAM was held in Kampala Uganda के एबे ही बसची हमर बसतिला नाम जोडा कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जोडा कि हेतला नॉन अलाइनमेंट समिट हमर इंडिया ही आकु करथिला जो जोडा कहा टाइम रे अपन जवाहरलाल नेहरू टाइम रे नसीर और भुट्टो समस्त मिसी के नाम जो कराइतला थीम वाज deepening cooperation for shared global affluence yes थीम भी समान आपको मन रखबे टोटली कि एबे काम्पाला उगांडा रखितला ना 19th summit बसतिला नाम रो और थीम होच deepening cooperation for shared global affluence ठीक Angola become the new member of NAM आपनकर कि आपनकर न्यू मेंबर टोटल साउथ सुदान आपन न्यू मेंबर है Angola न्यू मेंबर ऑफ NAM और कितना आपण म्हणते ओनली 1 and 2 करेक्ट आंसर होची ओनली 1 and 2 एबे जहां भी गोडा हेची करंटली तो सोडा आपण मन रखिबे पॉप जेमति 28 हेची तो टू ठेला तार थीम कोन थिला इंडिया कोन ता पे स्टेप्स नै ने सब गोडा को कवर करी गोटे गोटे choose the correct option important very important काहे कि ना आपनकर सिलेबस प्रीलिम सिलेबस रे डायरेक्ट आपनकर पॉवर्टी अछि ठीक अछि पॉवर्टी इनइक्वालिटी गोडा को मेंशन हिची तो पॉवर्टी जदि देखिबा तबे क्वेश्चन जदि इंडियन बेस रे देखिबे तो एनएमपीआई वेरी इंपोर्टेंट नै किरो ठीक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स हमकर बाहर करछि ना मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स नीति very important question नीति आयोग रिलीज एनएमपीआई yes Alkir Foster is used to measure MPI yes आपनकर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को बाहर करिया पई मदर कोली आके फुचाती आपु ही यूज करछि ए मेथड को ही यूज करछि के एनालिटी एमपीआई आ नीति कहार को डाटा जब देखियो कहार डाटा नोछ नीति यूजेस एनएफएसएच टू मेजर एमपीआई ठीक अछि एनएफएसएच पेर जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स नीति एठी आपनकर डाटा यूज अछि ना एनएफएसएच 4 and 5 को से यूज करछि नीति मन रखिदांतो तो एठी होछु करेक्ट आंसर होछु नाबे करंट अफेयर्स विथ आपनकर पॉवर्टी रे भी होछु अलकिरे फोस्टर मन रखिदांतो recently union finance minister presented the interim union budget 2024 which of the following are considered key budget document बजेट सब गुडा का इंपोर्टेंट बजेट से कोन नै कि जानते कोन नै सब गुडा का अपन देखियो दरकार तो इंटरिम बजेट होची कोन आपनकर जो सरकार भांगीबो एबे तो सेही पीरियड पय जो पीरियड पय रहिबो तो सेही पय जो बजेट पास करे सेटा होची इंटरिम बजेट आपनकर तो आंसर होची कोन ना सब गुडा का सेठी इससे सब गुडा को नै जानते consider the following statement Aadhaar मतदाता cannot be stored for more than 3 months State cannot enter into any contract with private corporations for sharing of Aadhaar data. Aadhaar is mandatory for obtaining insurance products. Aadhaar is mandatory for getting benefit funded out of the Consolidated Fund of India. Which statement are correct? Aadhaar cannot store for more than 3 months.
ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର କଣ mandatory insurance product पाया है आधार mandatory और सब बोला कुछ भूल ठीक है with reference to history of India consider the following pair Vilsa द्वार समुद्र गिरिनगर then स्थानेश्वर तो कोटा एगरा कोटी कोटी अच्छे तो विल्सा जब देखिए विल्सा हो जो फॉर्मली आपको एटा एबेर नाम हो कौन आर विदिशा अच्छे विदिशा विल्सा हो एक्चुअली विदिशा तो विदिशा कोटी अच्छे अपन करा विदिशा मध्य प्रदेश तो एटा हो अपन ठीक विदिशा मध्य प्रदेश द्वार समुद्र महाराष्ट्र तो द्वार समुद्र अपन करा कोटा द्वार समुद्र हो हलेबेड हलेबेड एगुड़ा मन रखुवे एटा बहुत इंपोर्टेंट हलेबेड ठीक अछि हलेबेड द्वार समुद्र एटा होछ आपनकर कहार कैपिटल द्वार समुद्र एटा होछ आपनकर कैपिटल ऑफ हयसाल आपनकर कैपिटल होछ द्वार समुद्र तो एटा होछ एक्चुअली कोठी एटा होछ आपनकर कर्नाटक तो एटा होछ भूल एटा होछ हलेबेड आपनकर कोठी होछ कर्नाटक ठीक अछि कर्नाटक तापरे गिरिनगर गुजरात ठीक अछि गिरिनगर गुजरात देन स्थानेश्वर यूपी स्थानेश्वर आपनकर कोजरा स्थानेश्वर एटा होछ कुरुक्षेत्र आपनकर हरियाणा रे देखा जाउछ हरियाणा रे देखा जाउछ स्थानेश्वर स्थानेश्वर होछ आपन correctly match the which pair given correctly match आपनकर 1 और 3 तो ए होछ आपनकर करेक्ट ऑप्शन होछ ए if you withdraw rs 1 lakh in cash from your demand deposit account at your bank the immediate effect on aggregate money supply in the economy will be the immediate effect of to reduce in by rupees 1 lakh to leave it unchanged to increase it by more than 1 lakh to increase by 1 lakh के तो हबो एटा कोन लिविंग अनचेंज यदि आपन कर डिमांड डिपॉजिट अकाउंट रो आपन कटवा बाहर होचन तबे इमीडिएट इफेक्ट किछि भी एग्रीगेट मनी सप्लाई रे किछि इमीडिएट इफेक्ट किछि भी पड़े तो अनचेंज सेटा रो archaeologists discovered a 6 feet 3 inch statue in which country एटा बे करेक्ट न्यूज़ अपन कहा स्टैच्यू के नंदी बट एटा कोठु बिल्ची आपनकर कांबोडिया कोन अछि अंकुर भाट जोटा कि इन सबुटु बड़ वर्ल्ड रो हिंदू टेंपल सेठी भी अछि तो सेठु आउट बहुत ही बड़ स्टैच्यू में फिट 3 with reference to history of literature in ancient India which one of the following is not correct literature ancient India Junagadh inscription presents the earliest specimen of Kavya style also the writer of Swapna Vasavadatta was patronized by Kusana Avadashana composed in Buddhist Kamashatra Vasayana is a secular test. तो कोटा आपनकर अभितरु which one of the following is not correct तो मेन आपनकर एटा होछ not correct अश्वघोष स्वप्न वासवदत्ता लिखितले but patronized by कुशाण ये अश्वघोष आगरु ही थिले पूरा ठीक अछि ये बुद्धिस्ट कोन टाइम रे थिले बुद्धंकर ये थिले ना तो अश्वघोष कुशाण माने बहुत परे ही आछन तो आका आगरु ये थिले तो एटा होछ आपनकर not correct ओके The Kuchi New Year is celebrated on which of the following? Kuchi New Year, which of the following? Uttarayana, Vestu Varas, then Vishuva Sankranti, then Muchi Apanagra. Asadi Beach. Apanagra Kuchi New Year कहाँ पे celebrate करा जाए? सर मुझे अपनाग्रा
static question which new year mane rakhi bas which new year asadi beach Pallava king who defeated important one Pallava king who defeated Pulakesi II and adopted the title of Vatapikunda କାହିଁକି ନା ଏଟା ହଉଛି ଆମର ଓଡିଶାର ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଯାଉଛି ଠିକ ଅଛି ଓଡିଶା ହିଷ୍ଟ୍ରି ପୁଲକେଶୀ ଟୁ କୁ ସେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ ବାତାପିକୁଣ୍ଡା ଟାଇଟଲ ମିଳିଥିଲା ତାଙ୍କୁ ବାତାପିକୁଣ୍ଡା ଠିକ ଅଛି ତ କିଏ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ନରସିଂହ ବର୍ମନ 1 ଓକେ imperial cholas ନରସିଂହ ବର୍ମନ 1 in medieval India foots and muqaddam footh ଆଉ muqaddam were used in the context of footh और muqaddam medieval India रे कौन पे यूज करा होतला मेनली village headman and landlord आपे village headman को आपनकर fruits को होतला and landlord को आपनकर muqaddam को होतला कहा टाइम रे medieval India ना मुगल टाइम ठीक है Which of the following techniques were used for decoration in Indo-Islamic architecture art and culture Indo-Islamic architecture very important art and culture में So, which of the following techniques were used for the decoration? Pitradura, then tessellation, the panels, jali work. जो सिंतरे में देखिए हम pitradura, जो जानते हैं तो अपना जो flower work है ना सेमान पर जो करते पूरा flower work सेटा को अपना को pitradura बोल को जाली work तो अपना जाली जो है कि टाइम तो actually सब गुड़ा को pitradura, tessellation, dado panel, आ जाली work ये चारिटा गुड़ा को अपना को जो Indo-Islamic architecture सब गुड़ा को use करा चाहिए तो अपना को answer होगा 1, 2, 3 and 4 सारे दिलों में जो 100 क्वेश्चन पूरा बहुत से ठीक 8 पूर्व रिसर्च अपन को आमे जो देइछु तो सेथरे अपन को मेंशन हिची 26 26 होची अपन को सेकंड एग्जाम ठीक अछि तो सेठी अछि अपन को हिस्ट्री फर्स्ट होची अपन को टेस्ट सीरीज रे तो हिस्ट्री अछि मैं फर्स्ट सेक्शनल दे सरला परे 10टा सेक्शनल रखछु सो दैट कि आपण फुल्ली कंप्लीट कर देबे सिलेबस से फुल्ली आपण अक्वाइंटेड हे जिबे तापर हमें बस फुल लेंथ टेस्ट नै जिबो केतना तो हमें जोडा को इंपोर्टेंट कांसेप्ट सबडा को डिस्कशन कर दो एंड आपण को आंसर पीडीएफ प्रोवाइड करबो सो दैट कि आपण को किछि डाउट होइबे नै एनी डाउट आपण जे कोनो टाइम रे चेक करबे ठीक छै दियंतु 26 सिलेबस अपन जानू सो दैट कि प्री पूर्वरु आपण माने थरे सिलेबस को सारी के अपन रिवाइज भी कर पड़थिबे अच्छा सेही वे रे हमें करबो आ बहुत ही भल से क्वेश्चन तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन तैयारी हिची सेमती वे रे हमें जोडा का प्रोबेबल क्वेश्चन जोडा का कॉन्सेप्चुअल जो कॉन्सेप्ट ओपीएससी क्वेश्चन पचारे ना आसुची जो कॉन्सेप्ट रो तो सेमती टाइप रो क्वेश्चन हमें तैयारी करबो सो दैट कि अपन ताको आंसर करके कले अपन माने गोटे कॉन्फिडेंट रहिबे कि आंसर कला बेर टेस्ट सीरीज देकी आछि ए लेवल टेस्ट सीरीज देछि तो मु आगु जाने छी किछि आपण सेठी आ माने नर्वस बने एबे तो मेन एते सारा पाठ पढ के भी पिला प्री क्वालिफाई कर परनते all of you right